माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन में मेरे साथियों, जय श्री राम। मैं सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 का पूरा समर्थन करता हूं और आज मैं इसके समर्थन में इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं खुद पिछले 50 साल से टोबैको फ्री हूं कंप्लीटली। मुझे याद है रामायण से पहले आई यूज्ड टू बी अ चेन स्मोकर। मैं दिन भर गुटखा खाता था। जब रामायण मेरे जीवन में आए उस दिन से लेकर आज तक मैं टोबैको फ्री हूं, इसलिए आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ये बिल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को लागू करता है। जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई थी क्योंकि कंपेंसेशन सेस लगाया गया था। अब देश के राजस्व की सुरक्षा के लिए एक्साइज ड्यूटी को नए सिरे से व्यवस्थित करना जरूरी है। ये बिल तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है इन चीज़ों पर पहले की जीएसटी प्लस सेस व्यवस्था हटाकर नई टैक्स सेस संरचना लाना। इससे सरकार का राजस्व ढांचा बदलना है। ये बिल तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि टोबैको एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए सरकार का ये कदम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा यानी हेल्थ सिक्योरिटी को मजबूत करने वाला है। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है कि लोग तंबाकू का सेवन कम करें और युवा पीढ़ी इस लत से दूर रहे। इस बिल का उद्देश्य है सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखना ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे और ये बिल समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लाएगा। ये बिल जन स्वास्थ्य और रेवेन्यू को मजबूत करने की एक आवश्यक पहल है। तंबाकू और अन्य हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी और बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का प्रस्ताव जनता के हेल्थ प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बिल का उद्देश्य हार्मफुल वस्तुओं की खपत कम करना और देश के विकास के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बिल किसी भी नागरिक या उद्योग पर अनावश्यक बोझ डालने के लिए नहीं है, बल्कि भारत के टैक्स बेस को मजबूत करने, हेल्थ रिस्क वाले उत्पादों को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए है। मैं सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूं कि उसने पब्लिक हेल्थ फर्स्ट की सोच के तहत ये मजबूत कदम उठाया है। तंबाकू पर बढ़ा टैक्स लोगों को इससे दूर रखने में मदद करेगा और देश में बीमारियों का बोझ कम करेगा। कैंसर, सांस तथा प्रेगनेंसी की बीमारियों को बढ़ाने वाले तंबाकू, सिगरेट इत्यादि पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना लोगों को इन बुराइयों से दूर रखने के लिए एक अच्छा कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पहले केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य पर ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमेशा देश हित को प्रथम रखकर कार्य कर रही है। ये बिल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस बिल का पूर्णतः समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री शशिकांत सैंथी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to register not just my opposition to this bill, but also my deep concern over the ad hoc, short-sighted decisions that the government is taking and also manipulating in the taxation system since the time GST started. The Central Excise Amendment Bill 2025 is another example, sir. The government is in the habit of taking ad hoc decisions, non-participative decisions, and then compensating for its own problems and pretending to rescue the nation by introducing more and more bills. Sir, let us be very clear. This bill is not about public health. Neither it is about national security. It is about filling the fiscal hole, basically created by the government's own failed GST implementation and its irresponsible borrowing. Speaker, sir, the government introduced GST with fanfare, saying that we will have one nation, one tax. Since the day it has been introduced, it has been one nation and constant confusion. For 8 long years, the government failed to manage GST revenues transparently, share it in time with the states, and created a lot of problems for the states. The so-called compensation cess, which was actually proposed for only 5 years, became a never-ending burden, primarily because of the government's center's failed attempt to protect revenues
and also the reason it took massive loans, and then using the compensation to cess to pay its own debts. And today, instead of admitting that the GST has been riddled with design flaws, technical failures, the government brings an amendment and sells it as a public health reform, which is absolutely, I think, is misleading. Sir, this bill claims to maintain tax incidence, but what it actually does is, it is going back to the pre-GST era. So basically now we will have GST, central excise, and then cess also. So basically all the reform idea which was proposed, I think again we are going to multiple confusions in the GST regime. Sir, so this government has achieved something extraordinary. They are bringing back the pre-GST tax structure. They managed to invent an even more complicated, cumbersome, and oppressive one. Sir, now the manufacturers, especially small scale and traditional businesses, will be crushed under the compliance requirements. We will see the details later. But then these are all issues, sir. So if it is about health issues, if it was about protecting the people from the ill issues of tobacco, which was discussed for so long, the government actually should have spent more on cancer treatment, de-addiction programs and other things. Rather, this is just a fiscal arrangement which the government is doing. Sir, there is absolutely no clarity on, probably we'll have to wait for the companion bill also, where this cess will go, or whatever the cess is going to be done, and how it is going to transform into outcomes. So, sir, the major issue that I am opposing this bill is also on the larger GST landscape, where states are repeatedly being ignored, compensation dues are chronically delayed, rate decisions driven by political compulsions and not economic logic, rate inversions causing chaos for MSMEs. The entire GST, which are supposed to be a cooperative federal structure, is completely not running the way it should be running. So the bill is nothing but a continuation of the same undemocratic style of functioning, centralization of power and decentralization of blame, and also ad hoc decision making, introduce one more bill, and then destroy all the reform process that you have brought in. So, sir, if the government is truly committed to reducing these harmful consumptions, it should go into other methods and not put a technical thing as a public health reform. So actually, sir, I think the bill is just a compensation for what problems have created through GST, and it should not have taken so long. But then again, to push it as a public health reform is something I don't think is in good interest. And I oppose this bill for this ad hoc method in which GST is being handled, and the entire country and the federal structure and the federal decision-making process is being compromised in this country. Thank you, sir.